Hello, friends. I am Manish Shokeen from the Circle of Psychology. Welcome to UPSC AKHADA. This is the second video in the PYQ themes series of videos. Artificial intelligence is a very important word in our lives and for UPSC also. In this video, I try to connect the artificial intelligence in the world of mental health. UPSC on every year basis from last 4 to 5 years is asking the question regarding artificial intelligence and its application, implication, or considerations in mental health or psychology as a whole. So let's explore कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. First thing is, what is the definition of AI? Next is the various aspects. कैसे AI हेल्प कर सकता है हमें प्रेडिक्ट करने में, कैसे डायग्नोसिस में हेल्प होगी, and 2 3 various aspects. Next is ethical consideration. Is it right to use AI? Is it going to supplant the therapist or supplement the therapist? Right now, how the therapists use AI in their therapy jobs, and the way ahead, how we can use human intelligence and artificial intelligence for the well-being of the human society. So this is the preface for this video. And coming to the definition part, I took 3 different definitions. First is standard from APA. APA का कहना है कि इट्स अ सब डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटर साइंस जो ऐसे प्रोग्राम्स बनाता है जो सिमुलेट कर सके ह्यूमन इंटेलिजेंस को. Then APA talks about various programs like LISP, Smalltalk, और काफी ब्रांचेस के बारे में डिस्कस करता है लाइक रोबोटिक्स, कंप्यूटर विजन, मशीन लर्निंग, expert systems. So these are the different branches of AI. और कहाँ का इसकी एप्लीकेशंस है कॉग्निटिव साइंस में, कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स में. एलन ट्यूरिंग की जो डेफिनेशन है वो भी यही कहती है कि कुछ ऐसे सिस्टम जो ह्यूमंस की तरह एक्ट करे. And the Luxton 2014 has defined AI as a technology designed to perform activities that normally require human intelligence. So all these 3 definition has a common undercurrent that any system which acts like human intelligence or human cognition is artificial intelligence. So this is our takeaway from this definition कि human cognition की तरह काम. अब इसके बाद बात आती है कि एआई और मेंटल हेल्थ में क्या रिलेशनशिप है, कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डायमेंशंस है where AI can be used in mental health care. So going further, पहले तो प्रेजेंट स्टेटस की बात करेंगे हम कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ एआई इन मेंटल हेल्थ. तो एआई डे बाय डे सर्जरी भी कर रहे हैं रोबोट्स, आपके हेल्थ के लाइफस्टाइल में भी असिस्ट कर रहे हैं, प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं कोई डिजीज होने के कितने चांसेस नहीं है. बट मेंटल हेल्थ में इट इज नॉट द फर्स्ट बट एट स्टिल एट सेकंड फिडल. रीजन क्या है कि मेंटल हेल्थ जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो अभी भी हैंड्स ऑन प्रैक्टिस पे ज्यादा फॉलो करते हैं, पेशेंट सेंट्रिक अप्रोचेस रखते हैं. तो उस केस में 2 स्टडीज हैं, वाइडम और
नासलुन की, they talk about जो practitioners हैं, they are following the traditional methods, not taking help of AI, or they are still more concerned about the privacy and security of patient data. This is another ethical dilemma which we will discuss later. कि जिस वजह से एआई अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया मेंटल हेल्थ केयर में. And going further, how it can help mental health care, how it can help mental health care. तो पहला है, it redefine diagnosis and understanding. इससे एक मेंटली इल पेशेंट की बेटर बायोसाइकोसोशल प्रोफाइल तैयार हो सकती है. For to support this empirically, I added two studies from Brewer et al. And Wahab et al. तो एक ने काम किया था साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स के ओवरऑल बायोमार्कर्स पर. सेकंड ऑल्सो टॉक अबाउट द लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कि लैंग्वेज प्रोसेस करके इट इज एबल टू डायग्नोज प्रॉपरली. सो प्लीज रीड दैट, यू विल come to know that what they want to say in these two studies. See, इम्पोर्टेंट बात इन स्टडीज को लिखना नहीं है, इम्पोर्टेंट बात है इस डायमेंशन को समझना कि पोटेंशियल है इसको डायग्नोसिस को रीडिफाइन करने का और अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करने का. These two studies or number of studies are there to support this argument. But first, you need to know this argument. Then announcing definition and biomarkers identifications. So these biomarkers are for indication of psychosocial or psychophysical uh, indications of any disease कि यार हाँ अब बॉडी में ये चेंजेस आ रहे हैं, बिहेवियर में ये चेंजेस आ रहे हैं, जो एक इंडिकेशन है या सिम्टम है किसी पर्टिकुलर मेंटल इलनेस का. उसमें एआई कैन हेल्प यू अलॉट. फॉर एग्जांपल नो एट ऑल का कहना था कि अल्जाइमर डिजीज जो है उसमें एआई यू कैन इजीली स्टडी द जेनेटिक डेटा टू टेल कौन बंदा कितना प्रोन है अल्जाइमर डिजीज की. सो इट्स अ वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ एआई जो कि हेल्प कर सकता है इन डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ दिस डिजीज जो काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ रही है स्पेशली इन वेस्ट. गोइंग फर्दर, प्री डायग्नोसिस स्क्रीनिंग और रिस्क मॉडल्स को बनाने में भी एआई का बहुत हेल्प हो सकता है कि ये पता चल जाए कि भाई कौन किससे ज्यादा प्री डिस्पोज है, कि किसको स्किज़ोफ्रेनिया होने के ज्यादा चांसेस है, who is more prone to panic and mood disorders. If we come to know, so we can develop the risk models जिससे कि we have the encircling of particular population which is more vulnerable, so we can implement the therapeutic treatments beforehand before they become patients. So it can really helpful in our preventive health care. So it is also very good. And last but not the least, computational approach in big data. कि मशीन लर्निंग में बहुत सारा डेटा आएगा हमारे पास, तो मशीन लर्निंग इज एबल टू सी द पैटर्न्स इन दिस बिग डेटा और रिगार्डिंग मेंटल हेल्थ. कि फॉर एग्जांपल किन किन रीजन्स में अक्रॉस आवर कंट्री पोस्ट कोविड पीटीएसडी ज्यादा पाया जा रहा है. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और some government institution like NIMHANS can focus more their initiatives like iCall, that is telephonic therapy therapy program. तो वहां के लोगों पर ज्यादा फोकस किया जा सकता है. एंड दिस कैन ओनली बी पॉसिबल by analyzing big data via machine learning. These two studies also talks about the same. इंडिविजुअल कैरेक्टरिस्टिक तक जा सकता है मशीन लर्निंग. इट हैज दैट लेवल ऑफ कैपेसिटी कि दे कैन trickle down to the individual level ki he or she has this kind of behavior, this kind of emotional expression, this kind of arousal in a particular state when he or she is not feeling mentally well, so that we can give him this particular treatment.
So see the power of AI. It can be used in this manner. So research methods may, psychological testing may, it can be, this big data can be panacea, I could say. Right now, how it can be used. Two broader dimensions are enabling remote monitoring and treatment. For example, someone cannot visit therapist on daily basis. He or she has few sessions only. So इसके लिए on daily basis observation and surveillance, AI can be a good tool. And some task demands automation. अगर वो टास्क ऑटोमेट कर दी जाए एआई के द्वारा तो थेरापिस्ट को ज्यादा टाइम मिलेगा किसी पेशेंट को ठीक करने के लिए. एंड country like India, which have therapist is to patient ratio जो कि बहुत कम है, it can be, you can say, a little helpful by automating the non-clinical works from diary entry to prescribing medicine and all. So AI in the present mental health care can assist in these two broader dimensions. There can be many, but I just thought about these two. Not my like these two, Kim Jones et al. And Topol E. Both are, one is 2017, another is 2019 study only. Now moving further, the ethical consideration. हमने सारी बातें तो कर दी, यहाँ यहाँ काम आ सकता है, पर प्रॉब्लम क्या है, एथिकल चैलेंजेस क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन या एथनिसिटी में कोई पर्टिकुलर इशू निकल के आ रहा है बिग डेटा से, सो स्टीरियोटाइपिंग एंड प्रेजुडिस इज वेरी कॉमन. तो उस चीज को कैसे एड्रेस करेंगे और प्रायोरिटाइज कैसे करेंगे एथिकल प्रिंसिपल्स को बायोमेडिकल रिसर्च में. फॉर एग्जाम्पल ऑटोनॉमी, जस्टिस, जो सब्जेक्ट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिकॉज हाउ एआई विल डू ऑल दिस ethical reasoning. और जो डेटा और टेक्नोलॉजी लिटरेसी गैप्स हैं बिटवीन पेशेंट, क्लिनिशियंस एंड द लैब असिस्टेंट्स, तो उसको कैसे फिल अप करेंगे. जो सभी स्टेक होल्डर्स हैं साइकोलॉजिकल रिसर्च और मेंटल हेल्थ केयर के, हाउ दे आर गोइंग टू कोप विद this change in technology named as AI. What should be the standards for AI to implement in mental health care? We are, there are no guidelines by the government or Ministry of Health. ट्रेन करना पड़ेगा. रिस्क असेसमेंट के इश्यूज हैं कि रिव्यू बोर्ड्स एंड दे हैव वेरी लिमिटेड नॉलेज रिगार्डिंग दिस emerging technologies. सो ये भी बहुत बड़ा इशू है कि जो जिनको रूल बनाने हैं उनको ही नहीं पता है कि टेक्नोलॉजी क्या है. In the, in the last, the way ahead could be कि HI plus AI is equals to well-being of humanity on a larger scale. HI is human intelligence plus AI is artificial intelligence. फ्यूचर प्रॉमिसिंग फ्यूचर हो सकता है एज अ रिसर्चर, एज अ प्रैक्टिशनर, एज अ क्लिनिशियन, डेटा और कंप्यूटेशन साइंटिस्ट असिस्ट करें मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स को. दिस कैन आल्सो बी मींस ओवरऑल कोलैबोरेशन कम्युनिकेशन can turn the stones in the mental health care and provide better health care, provide access to health care, provide quality mental health care to the citizens of this country and to the global citizens also. So this is the overall AI and mental health care ecosystem which I just discussed. And I would like to end up with a very beautiful quote by Carl Rogers. While the behavior of machines can be programmed and predicted, the complexities of human behavior and the intricacies of the human mind continue to challenge the boundaries of artificial intelligence. Carl Rogers, a great psychologist,
always says the human intelligence is still has an upper hand than AI. Just think about it. Do you agree or not? I do, because AI has its own limitations, lacks emotions, lacks empathy. There are a number of issues with AI. So it can always survive as a good servant, but definitely not a good master. Thank you. I will keep coming up with more videos on PYQ theme series.